Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Mishra. This is the video tutorial on descriptive questions and answers on KNC 501, Constitution of India, Law and Engineering, a subject introduced and being taught in BTech third year of AKT course. जी हाँ viewers, आज हम कुछ descriptive questions और उनके answers यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन लीगल सिस्टम, कंपनीज एक्ट 2013 पर कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हमने अपलोड कर रखे हैं। इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इन डिफरेंट टॉपिक्स पर अपलोड कर चुके हैं। कुछ व्यूवर्स की डिमांड पर हमने डिसाइड किया है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करें। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस टॉपिक के अनुसार हमने अपने तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं और उनके आंसर्स हमने लिखने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं पर आपको क्वेश्चंस बड़ा लगे तो आप समझ लीजिए कि उसमें कई टॉपिक्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, कहीं पर क्वेश्चन को शॉर्ट भी मिल सकते हैं, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट आंसरिंग और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें कवर्ड है। टोटल हम 6 वीडियो ट्यूटोरियल्स डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बनाएंगे। हर एक वीडियो ट्यूटोरियल में आपको लगभग 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। सो दे आर इन 6 parts. Right now I am going to deal with you part first that contains question 1 to question 5. Now come to the questions. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने लिया है, अक्सर ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन डिफरेंट हेड्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसकी डिटेलिंग आप इस तरीके से दे सकते हैं। हालांकि ये सारे पॉइंट्स हमने पहले ही अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। हियर यू कैन राइट लाइक दिस दैट इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1947 and its constitution, which came into force on 26 November 1949, is the supreme law. India has a common law legal system whose infrastructure bears the influence of British colonial rule. The Constitution is based on the Government of India Act 1935 passed by British Parliament. The Indian Constitution lays out a federal union of 28 states, 6 union territories and 1 national capital territory. The union and states have separate executive and legislative branches, whereas the territories are ruled by the national government. Law generated by the union is superior to that of the states. तो इस तरीके से इस शॉर्ट में ये आप आंसर कर सकते हैं। अब हम हेड्स पर आते हैं। दिस विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट स्लाइड। द नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन एक्जीक्यूटिव इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं, बट द प्राइम मिनिस्टर who is the leader of the majority party and head of the Union Council of Ministers is more politically powerful. India has a bicameral parliament whose upper house is the Council of States, जिसको कि हम normally जानते हैं राज्यसभा, and whose lower house is the House of People. Keep this in mind. हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए, कहीं पर पूछा जा सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहें या हम राज्यसभा कहें, दोनों एक ही बात है। लोकसभा के लिए हम हाउस ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं। द स्टेट एक्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय अ गवर्नर and while most have a unicameral legislative body called the Legislative Assembly, some are bicameral with the Legislative Council as well, जैसा कि कुछ स्टेट्स में देखा जाता है। Apart from the English influence, personal laws are frequently based on Hindu and Islamic law. Hindu law has been codified and Islamic law is based on authoritative commentaries and precedents. The law board has works dealing with these great religious legal systems with self-marks starting ancient Hindu and Islamic. For more information, yes, definitely you can refer to the religion and law.
on this particular section. Now, let us have another question. What form does your constitution take? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. So here इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं. The Constitution of India of 1950 is a written document which currently comprises over 450 articles and 12 schedules. It is the longest written constitution of any sovereign country in the world. The Constitution of India was drafted and adopted by a constituent assembly of elected representatives of the people and came into effect on 26th January 1950. The Constitution of India is not the creation of Parliament but of the people of India and is therefore supreme. India's constitutional supremacy is evidenced in the opening sentence of the preamble to the Constitution of India. जैसा कि preamble आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे. It starts like, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now this is continued. आप आगे भी कुछ इनके पॉइंट्स फीचर्स लिख सकते हैं इसमें. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ cosmopolitan document because it derives several of its features from foreign sources. Mostly notable points में यहाँ दिए हुए हैं. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एंड बाईकैमरलिज्म फ्रॉम द यूके, ये यूके से लिया गया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरलैंड, ये पोर्शन आयरलैंड से लिया गया. फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द यूएस, ये यूएस से लिया गया. यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट कनाडा से बारो किया गया. कॉन्करेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये पोर्शन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया. फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द फॉर्मर द यूएसएसआर, जैसा कि आप जानते हैं ना दैट द यूएसएसआर इज नो मोर, दिस गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991. तो ये पोर्शन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात वहां से हमने बारो की. हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is neither purely federal nor purely unitary and is widely considered as quasi-federal in nature. Please keep this in mind. ये important point. Now let us have another question. Question number 3. What system of governance is provided for? यहाँ पर हम points में बात करेंगे. सबसे पहले system की बात करेंगे हम. यहाँ पर हमने current data इनफैक्ट कोशिश किया है इंक्लूड करने की, फिर भी जहां पर चेंज हो आप अपने आप से लगा सकते हैं. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरीज विद जम्मू एंड कश्मीर बीइंग एन erstwhile स्टेट डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरेटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली अभी पिछले साल हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019. पिछले साल नहीं, पिछले साल के पिछले साल, क्योंकि 2019 की बात है ये. सो इंडिया हैज ए प्रिलिमिनरी सिस्टम with legislators at both union and state levels. यहाँ पर हमने करेक्शन करके डाला है. अब हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं. द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये आया था, ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. द रियल एक्सिक्यूटिव पावर actually is vested in the prime minister and the council of ministers, and the president must act on their aid and advice. A similar system is established at the state level. While the governors are the head of the states, the executive powers are exercised by the chief ministers, leader of the state government, and the council of ministers. This is question 3 is continued. Now let us talk about structure. Here, 1, that the Indian constitution had adopted a bicameral legislature at the union level. The Indian parliament comprises 2 houses, as जैसा कि पहले बताया गया है, लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, द पॉलिटिकल पार्टी और coalition of political parties with the majority in the Lok Sabha forms the government. The members of the Lok Sabha are directly elected by the people from their territorial constituencies. दूसरा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, राज्यसभा. The members of the Rajya Sabha are indirectly elected from the state assemblies. However, the legislative powers of these 2 houses are quite similar. At the state level, there is the state legislature. All states have a legislative assembly
which is similar to the Lok Sabha, and some states may also have a second house, that is the Legislative Council. Currently, only 7 of the 28 states have a Legislative Council. The legislative assemblies have significantly more power than the legislative councils. The number of the state legislature members depends on the population of the specific state. यहाँ एक बात ध्यान देने की है that जितने भी हमारे स्टेट्स हैं 28, उसमें से केवल 7 स्टेट्स ही ऐसे हैं जहां पर कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट कर रही है. क्वेश्चन नंबर 4. डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए सेपरेशन ऑफ पावर्स? इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनलाइक द यूएस एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसा कि हम जानते हैं कई कंट्रीज फॉलो करके हुआ है, does not have an express provision for separation of powers. However, it still recognizes and incorporates the doctrine of separation of powers between 3 branches. What are these? Legislature, executive, and judiciary. Therefore, while no formal lines have been drawn between them, it is widely considered that the doctrine of separation of powers runs through the Constitution of India. There is often an overlap in the scope of the functions of the 3 branches. Because of the parliamentary form of government, the dividing line between the executive and the legislature is naturally rather a fine one. Under the Constitution, the executive can legislate using, this is continued, 1 or the first point, the ordinance making powers of the president and the governors. Next, डेलीगेटेड एक्सक्यूटिव लेजिस्लेशन. ये याद करने की जरूरत है आप लोगों को, या दिमाग में रखने की जरूरत है. आप एक बार ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द जुडिशरी इन दैट इट कैन लेजिस्लेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, jurisdiction, and powers of the courts, and can also impeach judges. Mind it. The judiciary has wide powers to review and strike down unconstitutional executive and legislative decisions and actions. जैसा कि हम सुनने में भी आता है कई बार सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स they give their own directions and decisions. The legislature can make such rulings ineffective by amending the law while staying within the constitutional limits. Obviously, a concept known as legislative overruling, जिसको कि हम जानते हैं, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं. This is an example of the inherent checks and balances under the Constitution, which further strengthen the separation of powers. Despite the fact that 3 branches interconnect and have functional overlaps, the Indian judiciary has recognized the doctrine of separation of powers as a basic feature of the Constitution and an essential part of the rule of law. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को आप समझ के लिख सकते हैं. इस वीडियो ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द जनरल लेजिस्लेटिव प्रोसेस? इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम एम्पावर्स लेजिस्लेटिंग at the union level by the Indian Parliament and at the state level by the state legislatures. The subjects of legislation are clearly defined under 2 separate lists in the Constitution of India, the union list and the state list. There is also a concurrent list of subjects on which both Parliament and the state legislators can legislate. If there is a conflict between legislation of the union and the state, union legislation prevails, although there are some exceptions to this, जैसा कि पास्ट में देखा गया है. The law making procedure is generally similar at both levels. This section focuses more on the legislative process of the Indian Parliament, and reference is made to the state legislatures only where there is a material difference. This is continued. Now, another point relating on as a part of this question, proposal and drafting. यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं. Typically, the next of a proposed law, that is a bill, यह दिमाग में जरूर रखने की जरूरत है, is drafted by the relevant ministry of the government. The bill is circulated to other relevant ministries and sometimes even to the public for their input. After revisions are made as necessary, the bill is presented for approval to the Council of Senior Ministers headed by the Prime Minister. This is known as the Union Cabinet. On approval, the bill is introduced in
either house of the parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha. The only exception to this is money bills, bills of fiscal nature, which can be introduced only in the Lok Sabha. ये पॉइंट्स अगर आप रखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं. Now, another point here we need to understand scrutiny. In either house of the parliament, a bill generally goes through three readings, that is, one for introduction, one for scrutiny, and one for passing. Once a bill is passed by a majority in one house, it is then introduced to the other house, but the same stages are repeated. All bills except money bills, keep this in mind, need the approval of each house. This is different from the state legislatures, where the legislative council only plays an advisory role and where the legislative assembly is the final authority. For money bills, the Lok Sabha has the final authority and the Raj Sabha has only recommendatory powers. After a bill is passed by majority in both houses, the bill is sent to the President for assent. The President can seek information or clarification about the bill and can return it to the Parliament for reconsideration, but only once. If both houses pass the bill again, regardless of whether they implement the President's recommendation, the President must give his or her assent. Now, enactment. When presidential assent is received, the bill becomes an act of Parliament and is notified in the official government gazette. The President can also legislate by passing an ordinance when the Parliament is not in session. When the Parliament is in session again, the ordinance must be ratified by the Parliament for it to continue as law, otherwise it will lapse. The governor has similar ordinance making powers at the state level. ये समझने की जरूरत है. So this was all about this video tutorial. I hope that you have liked it and definitely आप इसको सुनेंगे समझ में आ जाएगा. अगर ऐसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू पास ऑन टू अदर्स, योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर नीडी नाउ or even maybe needing in the future. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.